Hi guys, welcome to my cult stream where you learn to surf with me from the heights of motives to the depths of knowledges. And this is your Sahil Karan, and you're watching my channel, my stream, my season in a very new entirety as always. And we first of all wish you a very happy new year to all of you. And आपका बहुत बहुत धन्यवाद that in a first go I've got so many positive responses, so much positive reviews, so much positivity around me. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इस चीज़ से कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है. प्लीज़ लेट अस मेंटेन दिस टुगेदरनेस टिल द एटर्निटी. और जो भी है, वी आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू. एंड in this video we'll be learning about our tactics to master the ways how to present our code effectively, what are the salient features or brief characteristics which make our code very efficient और बहुत ही ज़्यादा definite prove होने में लगेंगे. और it will be just like a template how you write your codes, how you attempt your practical examinations, how you attempt your lab examinations, or how you write your codes for your project or placement. So without any further delay, let's get started. और before that, I would like to tell you that whatever notes, जो भी notes मैं देता हूँ, जो भी content मैं आपको post करता हूँ, उसके सारे soft copies description box में रहेंगे. और whatever doubts you have, please feel free to share your doubts in the comment section. I'll be very happy to answer all of them. So without any further delay, let's get started. So hi guys, today we'll be discussing the template to write and execute lab programs. A template to write and execute our lab programs. Why it is very important? Okay, as you know, in each field there is always a 70-30 rule. There always comes a 70-30 rule. There always comes a 70-30 rule where your 70% of your content and 30% of presentation. 30% of presentation. This 30% of presentation rules this 70% of content. So templates is nothing but a way of presentation, according to me, way of presentation of your programs. Okay, that is why I give my templates. So generally when I'm executing a science experiment, when I want to conduct a science experiment, demonstrate a science experiment, we follow some kind of steps like aim, apparatus, then coming to hypothesis or concept, then coming to procedure, then coming to observations, and then your results. So we follow a sophisticated process: aim, apparatus, hypothesis or concept, procedure, observation, result, to obtain a product. एक एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं. इन द सेम वे, इफ यू सी the template, if you observe the execution of programs as a series of operations in your lab practicals, or whether it is your projects, or whether it is some kind of an exam where you have to where you have to show your code properly, it looks very classy and it looks very attractive. It provides effectiveness और आपकी confidence देता है to propel further, right? So basis on that we'll be designing our code today. Okay, so now listen. Whenever a question is given, when suppose if I write, suppose in our case we'll be taking a question: array elements, scan and display array elements, scan and display, or read and display array elements using C program. So basic, in our case we'll be taking this question to understand how you can create your templates properly. So first of all, तो हमें aim of the experiment लिखना है. We should write the aim of the experiment so that it becomes more effective. अगर हम aim लिखते हैं, that means we are showing what the experiment we are going to perform. So make sure you write only the experiment which is given in your question. Directly you have to put it on the aim. Okay, uske baad, now let us talk about
द फाइल नेम। सी, मेरे लिए फाइल नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हेन यू चेक सम लैब मैनुअल्स और कुछ, द फाइल नेम इज ऑलवेज गिवन। फाइल नेम इज नथिंग बट आप किस फाइल के नेम से यू आर सेविंग योर प्रोग्राम इन योर फोल्डर्स। सपोज इफ आई एम टेकिंग अरे डॉट सी, if it is a C program, array.java or array.python, array.python. So it's nothing way to store or to save the elements. आपके लिए एक compiler दिया जाएगा where you have to execute your programs. There you have to save your programs in this format, in .c format or .java or .python or .c cpp format, whatever it is. So that is why here we use the file name. It makes your code look more good. ओके, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज योर डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज अ डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट। उसको उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू अप्लाई वेल। ओके, सो अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम? दैट इज माई अरे। So you have to write whatever you know about the array. It is a contiguous memory location, contiguous elements are stored in contiguous memory locations. तो जो भी आपका description whatever you know, आपको उसको words में put up करके आपको you have to present it. Okay, डिस्क्रिप्शन, it's up to you, आप कितना आपको आप लिख सकते हैं। what the program, if the program is very simple, you no need to write you no need to write in detail. But if the program demands, like हमें like data structures and algorithms में there are various sorting techniques like bubble sort, insertion sort, merge sort, तो उसके लिए एक suitable description रहता है and only that you are supposed to write. Okay, only that you're supposed to write. So description, size of the description, it's up to you. Then next part comes is your algorithm. Algorithm, जैसे कि आप सबको मालूम है, as a computer science engineer students, you all have to know algorithm is step by step process, step by step process to write a code, step by step process to write code, step by step process to write code. Okay, so here what is the step by step process? दिस यू कैन, ये आप कोई भी फॉर्मेट में ये आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एनी फॉर्मेट यू कैन प्रोजेक्ट योर एल्गोरिदम। सपोज इफ आई एम राइटिंग अरे, द यूनिवर्सल टेक्निक, अगर जिनको दे आर नॉट गुड एट डेटा हैंडलिंग और समथिंग, यूनिवर्सल टेक्निक टू राइट एल्गोरिदम इज योर स्टेप टेक्निक। यू कैन यूज स्टेप वन, राइट दिस स्टेप, स्टेप टू, आप किस तरह से अपने कोड, आप हर एक प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो, जस्ट राइटिंग दैट इज योर स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। रिमेंबर दीज आर ऑल टेस्टेड टेक्निक्स और इनको यूज करके मैंने खुद बहुत ही अच्छे मार्क्स में मेरे आए हैं, लैब में मेरे फुल ऑन फुल मार्क्स आए हैं। So that is why I am suggesting you these kind of techniques, how to write your program effectively. It's a very simple and silly topic, but even though you should take it under consideration. So after this comes is your actual part of your lab program is your code. Just put a code, follow the फॉर्मेट, अगर सी प्रोग्राम है तो सी प्रोग्राम का फॉर्मेट फॉलो करें, जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ग्लोबल डिक्लेरेशन, लोकल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, लोकल डिक्लेरेशन, देन डिफरेंट स्टेप्स, अदर फंक्शंस एंड रिटर्न जीरो, रिटर्न टाइप। अगर आप जावा फॉलो कर रहे हैं तो पब्लिक क्लास। इफ आर डेटा स्ट्रक्चर्स आप फॉलो कर रहे हैं यूजिंग सी प्लस प्लस और समथिंग, यू नोट योर ओन फॉर्मेट्स ऑफ योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन सब के बारे में मैं डिटेलली डिस्कस करूंगा, but for time being we are discussing C. So according to format, I am supposed to write hash include stdio.h. Again, I am supposed to write my main function. I'll execute this program and I'll show you. और सबसे main part of your code is your comments. This is the heart of your code. Comments make your code more definite. ये आपके कोड को definiteness देते हैं. Comments make your code more definite. क्योंकि when I talk about when I talk about definiteness, what is a definiteness? When I write a program, in every step, उस स्टेप में क्या किया है, प्रोग्रामर ने किया क्या है, टू मेंशन दैट जब कोई इवेल्युएट करता है आपके कोड को,
देन वॉट एवर कॉमेंट आप लिखते हो, उससे क्या होता है कि एक डिटेल मिलता है टू द एग्जामिनर दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट पार्ट ऑफ लाइन एंड व्हाट डिड ही डू इन दैट पार्ट. इससे उसको एक ब्रीफ डिटेल मिलता है which will easily fetch you nice marks if you write your comments properly. And make sure you don't write your comments over. Over comments are not required. Limited but meaningful. Limited and meaningful comments are entertained. And उसके बाद corresponding outputs. उसके बाद corresponding output you have to write. In corresponding output make sure you are writing things very properly. अगर इसमें टेस्ट केसेस होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं people who have gone deep into programming, एक प्रोग्राम के आउटपुट को टेस्ट करने के लिए we'll be having more than one case where आउटपुट को डिफाइन करता है. So in that case, make sure at least आप 2 to 3 cases लिखिए. When it comes to data structures and algorithms, जैसे कि lists है और it is a tree or it is structure, accessing the structure variables, इसमें more than one cases को हमें मतलब टेस्ट करना पड़ता है. लाइक एक एक बार हो गया, then you are supposed to write for 2 3 people. Now give the details of customers, give the details of 3 customers. तो इसमें क्या होना पड़ता है, आउटपुट में 3 कस्टमर्स का डिटेल्स हमें चाहिए. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउटपुट को नेग्लेक्ट करते हैं. यू शुड नॉट नेग्लेक्ट द आउटपुट. whatever the output is there, you should not make it so big or you should not make it so small. Just make it at least 2 to 3 test cases you have to put to make your output effective. Okay, 2 to 3 टेस्ट केसेस यू हैव टू पुट. सो ये बहुत ही बेसिक चीज है. ऑन एंड हाउ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, लेट मी शो यू अ सैम्पल प्रोग्राम. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज माय कंपाइलर इंटरफेस. आई जनरली प्रीफर ऑनलाइन जेडीबी कंपाइलर्स फॉर सी प्रोग्राम. सो यू कैन सी हियर, पहले हम अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखेंगे. हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h header file. Okay, then I continue with my main function. Int main, return type of main function is my integer type. And next I declare my variables. अब मैं अपना variable declare कर रहा हूँ. Since it's an array, I declare some name array arr of 10. Okay, so here I am using comments with double slash, or you can use slash or asterisk. Okay, इसे slash और asterisk कहते हैं. जब आप slash और asterisk as a comment use कर रहे हो, make sure end line में asterisk और slash डालना ना भूलें. Asterisk or slash डालना ना भूले, because asterisk and slash gives the starting point and this gives the ending point of the comment. When you're using double slashes, no need to give, because वो एक one line comments होते हैं. These are long comments. अगर आप end line declare नहीं करेंगे, then it will take the all the remaining part as the comment itself. जैसे आप देख सकते हैं, if I take the asterisk, ये इस colon को भी एक comment की तरह treat कर रहा है. So I don't have I shouldn't have that problem. So I am taking. So this is variable declaration, variable array declaration, right? अब now I am asking the user, जब भी आप अपने प्रोग्राम्स लिखें, आप यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम्स लिखें. इट शुड बी इंफॉर्मेटिव टू द यूजर. अब मैं यूजर को पूछ रहा हूं, एंटर द साइज ऑफ एन अरे. कितने एलिमेंट्स यूजर को एंटर करने हैं, मैं उसका फ्रीडम उस यूजर को दे रहा हूं. एंटर द साइज ऑफ अरे. Okay, I'm here creating a new line, semicolon. And to take input from the keyboard, हम scanf function को use कर रहे हैं, right? Scanf double quotes format specifier and comma out of the quotes ampersand n. अब मैं एक new variable n को declare कर रहा हूँ. So here I'm writing n, where n declares the size of the array. Okay, तो यहाँ अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, I'm using comment to take size as an input from the user. Okay, next, अब मैं यूजर को, अब मैंने इनपुट ले लिया है. आफ्टर दैट आई एम आस्किंग द यूजर
enter the array elements max percentile d only, क्योंकि अरे एलिमेंट्स उससे एक्सीड होना नहीं चाहिए, अदरवाइज द कंपाइलर विल नॉट एबल टू फंक्शन, उससे ज्यादा यू कैन नॉट फंक्शन। सो ऑलवेज मेक श्योर यूजर को आपके हर स्टेप का इंफॉर्मेशन डिटेलली मिलना चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग वन मोर कमेंट टू टेक अरे एलिमेंट्स। नाउ सिंस आई हैव टू टेक मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेम अरे, इसलिए मैं यहाँ फॉर लूप को यूज कर रहा हूँ टू टेक अरे एलिमेंट्स। ओके, नाउ फॉर लूप आई इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ जीरो से, आई का रेंज डिसाइड कर रहा हूँ विच इज अप टू एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एन अरे। सिंस मैं एक न्यू वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग आई। ओके, हियर आई एम राइटिंग आई, flower brackets. Next, since I have to take an input, I am using my scanf function, format specifier percentile d. Okay, and since I have to give address to my elements, a ampersand arr of I colon. अब मेरा काम क्या है? To print the array, to print the array elements, right? अब मैं प्रिंट करने वाला हूं अपने अरे एलिमेंट्स। सो आई एम गिविंग, अब मैं यूजर को नोटिफाई करता हूं the array elements are, ओके, सिंस एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, सो आई एम यूजिंग अ फॉर लूप अगेन, आई इज इक्वल टू जीरो इनिशियलाइजेशन, आई रेंज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, this is a sample code, मैं उसका detail explanation when I discuss the concept, then I'll give you complete details of the element concepts, ताकि आपको हर एक concept clear हो जाए। So don't panic, beginners जो भी हैं, please do not panic, I'll complete each and every curriculum in detail. Okay, so printf again percentile d, format specifier comma, here I should not write ampersand because I am not giving address, I am printing the elements which are taken from the memory to the monitor, from input to output, keyboard से monitor में I have to print. Okay, see here I'm taking arr of I, right? Is it clear? अब last में return 0. So this is the code, देख लेते हैं if there are no errors, there is, so make sure आप कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कोई भी एरर्स है या नहीं आप उसे चेक कर लें। So we'll run the code, so I'll run the code again. यू सी, जैसे आप आउटपुट देख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो दिखाया जा रहा है, नाउ ही इज आस्किंग मी टू एंटर द साइज ऑफ अरे। मैं 5 एलिमेंट्स की फ्रीडम उसको देता हूं, सो इज आस्किंग मी टू एंटर 5 एलिमेंट्स। ओके, जितना साइज एरे का साइज होगा उतने तक वो एलिमेंट्स लेगा, उसके बाद वो लूप को टर्मिनेट करेगा। सो आई एम एंटरिंग सम 5 एलिमेंट्स, 367, 90, 86 and 5. You can see here the array elements are 367. Okay, to make the code more user friendly, मैं इसे percentile d में I am giving an new line. Okay, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। You can, now you can see the output जो है, इट इज कम्प्लीटली यूजर फ्रेंडली। यूजर किस तरह से आउटपुट चाहता है, सो स्टेप बाय स्टेप आउटपुट में आपको कंपाइलर खुद कंसोल गाइड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, सो इज आस्किंग मी टू एंटर द साइज ऑफ एन अरे, आई एम एंटरिंग 5, सो ही विल टेक 5 एलिमेंट्स फ्रॉम मी। ओके, 5 से ज्यादा मैं एंटर नहीं कर सकता, वो खुद मुझे बोल रहा है। एंड रेंज हमने 1 से लेके 5 तक दिया हुआ है, फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 5। तो 0 टू 5 के बीच में कितने एलिमेंट्स है? दीज आर 6 एलिमेंट्स, so it will take 0 to 4, that is 5 elements वो हमारे लेगा। So like 3, 7, 8, 6,
9. You can see पहले उसने स्कैन किया है and then it has displayed me the array elements 3, 7, 8, 6 and 9. So this is your program. Okay, so you can write programs like this. So जो भी है आप अपने कंसोल से आउटपुट कॉपी करके आप अपने पेपर में आप लिख सकते हैं, और कोड को भी इसी तरह से आप एग्जैक्टली लिख के सेव कर सकते हैं फॉर योर लैब प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स और समथिंग. यू कैन राइट कोड इन दिस मैनर. सो देखिए मैंने यहाँ कमेंट्स को भी बहुत ही मिनिमल रखा है. मैंने हर एक लाइन में कमेंट नहीं दिया है. जहां सोफिस्टिकेटेड मुझे लगा मैंने वही कमेंट दिया है. 19 लाइन्स के कोड में कुछ लोग क्या करते हैं कि 19 कमेंट्स डाल देते हैं. दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट. You have to write one comment, two comment, three comment, four. So 19 line के codes में you can see 4 comments, और जितने भी major steps है there I have mentioned. So this is the way you have to write your program. So that was the wrap up for today, guys. So I hope you have understood the points which I have discussed and you will be able to apply it. So as promised, the chill pill for today is always remember one thing: lighting off somebody's candles will never make your shine brighter. जब भी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं आपको कॉम्पिटेंस झेलना ही पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके रास्ते में आप किसी और के कॉम्पिटेंस को आप डिटोरिएट करें, किसी और के एफर्ट्स को आप डिटोरिएट करें और आगे बढ़ें. उससे सीखने की कोशिश करें, कुछ पूछने की कोशिश करें, बट ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल who will never judge your competence, who will always try to improvise yourself, who will always try to synchronize with you, will always try to make sure that you are on right path. So, and let's meet in my next video. Till then, peace in the pace, and thank you so much for watching. Please stay tuned for next content. Thank you.